So these are the agendas, right? What is marketing? Foundations of digital marketing. Okay. So you will see a lot of English. Okay. Lot of English. But if I were to make a start on what is the foundations of digital marketing, then I will say every time you scroll, search or shop online, डिजिटल मार्केटिंग इज व्हाई यू सॉ दैट एंड व्हाट यू सॉ दैट ओके. तो ऑनलाइन में आपको जो भी एड मिल रहा है, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, अपब्रिंगिंग, आंख बंद करके आप उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं. या फिर तो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसको सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेस, ऑनलाइन डिवाइसेस के तहत ही किया जा सकता है. इसमें प्लस पॉइंट क्या है पता है? आपको फिजिकल लेबर कभी नहीं करना पड़ेगा. ओके. एंड चीजें ज्यादा एसेसिबल हो जाती है. प्लस रिटेंशन का लेवल इसमें हाई रहता है. ओके. बहुत लेमन लैंग्वेज में बहुत बेसिक चीज है. आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है कि व्हाट इज फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग में इट इज सेड दैट प्रमोटिंग एनीथिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, राइट, व्हिच इज सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल्स, वेबसाइट्स, एप्स. ओके. इतने आपके प्लेटफॉर्म्स रहे. देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायर जर्नी. अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के तहत कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, सो हाउ इज द प्रोसेस, मेरा क्या अप्रोच रहेगा. ओके. सो द बायर्स जर्नी इज एज सच कि पहले मेरे को अवेयरनेस हुआ उस प्रोडक्ट को लेके कि अच्छा ऐसा कुछ है. देन मैंने उस प्रोडक्ट को कंसिडरेशन दिया, यानी कि मैंने उसको अक्नॉलेज किया कि ओके ये चीज है एंड दिस इज वर्थफुल. ओके. दिस इज रिलेवेंट. देन कम्स द स्टेज ऑफ डिसीजन. नाउ आई विल मेक द डिसीजन कि मैंने ये खरीदना है या नहीं खरीदना. जो मैंने खरीदना है, फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है बायर जर्नी का, दैट इज रिटेंशन. ओके. रिटेंशन एक बहुत बड़ी चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत बड़ी चीज है. ओके. एंड द रीजन व्हाई आई से दैट इज बिकॉज विल कम विल कम टू अ टॉपिक कॉल्ड CLV और LTV. ओके. उस पर हम लास्ट में बात करेंगे. दैट इज वेरी बिग थिंग. ओके. वेरी बिग थिंग. दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू. ओके. सो वो क्या है, CAC क्या है, विल टॉक अबाउट दैट एज द सेशन एडवांसेस. ओके. So stay patient, stay connected, right? And then traditional marketing talks at people, but digital marketing talks with people. Okay. So digital marketing is something which is more measurable, targeted, and two-way process. Okay. So to support everything that I've said so far, let me drop three statistics which will incentivize you about the thought, the idea, and the process of digital marketing. पहली बात जो कि आप लोग शायद से नहीं जानते होंगे वो ये है कि देर आर 5.3 बिलियन इंटरनेट यूजर्स ग्लोबली. ओके. एंड ये 5.3 बिलियन जो इंटरनेट यूजर है, दे आर द मार्केट, दे आर द ऑडियंस ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. अगर हम फिजिकली मार्केटिंग करें या मार्केटिंग का कोई और तरीका अपनाएं, तो हमारा जो पूल ऑफ ऑडियंस है उसका पेरिफेरल ग्रोथ काफी लिमिटेड हो जाता है. बट यहाँ पे द होराइजन्स ओपन अप टू सच एन एक्सटेंट which makes it a very attractive commodity. Okay. So 5.3 billion internet users. Okay. Then digital ads spend crossed $667 billion in the annual year 2024. इतना पैसा लग रहा है, इतना बड़ा मार्केट है. ओके. एंड प्रॉफिट मार्जिन एंड करेंसी एक्सचेंज का उतना ही सब कुछ इस पे डीलिंग्स है. दैट इज वेरी इंसेंटिवाइजिंग, राइट? Then companies using digital marketing generate 3 times more leads at 62% less cost than traditional. यानी कि इसमें मेरा फायदा क्या है? मैं पैसा कम लगा रहा हूँ एंड मेरा लीड जनरेशन 3 गुना ज्यादा हो रहा है. तो इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है? मैं रादर ये बोलना चाहिए मुझे कि इसमें नुकसान क्या है. ठीक है. नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है. दैट इज वाई डिजिटल मार्केटिंग को इतना ज्यादा अपनाया गया है एंड इसके फायदों के बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने हैं. ठीक है. And to end this foundations of digital marketing, I would say that digital is not a channel anymore. It is the entire playing field. Okay. And all of us are knowingly or unknowingly the players of this very channel. Right. So this was about foundations. Now let us go to the next slide, next topic. So now we are coming to content marketing. इधर बुकिश लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा होगा कि content marketing is creating and sharing valuable, relevant content, that is blogs, videos, infographics, to attract and retain a defined audience without directly promoting your brand. Okay, so let's understand this, right? So content marketing is something that like shows the usefulness of the thing that you're selling to the audience. It is not directly promoting your brand, it is not directly promoting your product, but showing the usefulness
or the at times maybe the disadvantages as well. जैसे कि let's take an example. Okay, you are buying a moisturizer from the store, right? So normal advertising or normal marketing would include the fact where the brand is saying, pitching to you कि मेरा ये मॉइस्चराइजर खरीद लो, इसमें विटामिन सी है, इसमें एसपीएफ है, what not. But content marketing would be that part जिसमें the brand says like writes an article about it कि 5 mistakes that damages your skin, 5 ingredients that can help your skin, 5 ingredients that is actually doing harm to your skin but you don't know about it. That is content marketing. Content marketing के 6 types इधर लिखे हैं. That is, one is blog posts. Now writing blogs about the usefulness, beneficiaries, anything. That is blog posts. उसमें you can write long paragraphs, write long articles in it. ये बहुत एक्सप्लेनिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है जिसमें बहुत कंटेंट होता है. सो पीपल अब भी ब्लॉग पोस्ट्स पे कम ही रिलाई करते हैं बिकॉज यू नो nowadays people don't like to read a lot. Second, we have video content. Now this sector has flourished to next level. ठीक है, video content अब भी like it's making millions, brands are making millions through it. So video content में we have YouTube, Instagram, TikTok, your YouTube पे shorts, everything is included in video content. Then we have infographics. अब infographic क्या है? ये जो आप PPT का slide देख रहे हो ना, दिस स्लाइड, लेट्स सपोज ये स्लाइड ऐसे होता कि ऐसे बस लिखा है ब्लॉग पोस्ट, इसके नीचे बस लिखा है, कोई कलर नहीं, कोई फॉन्ट नहीं, कुछ नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा सा बोल्ड पे हेडिंग. दैट वुड हैव सीम्ड वेरी वेग. इंटरेस्ट आता क्या आपको? लाइक सच्ची बताओ, इंटरेस्ट नहीं आता. आई वुड प्रिज्यूम दैट. सो दैट इज वेयर इन्फोग्राफिक हेल्प कि थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, जैसे हम बुक में हाईलाइट करते थे ना बचपन में ऐसे एग्जाम से पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इट इज इन्फोग्राफिक हेल्प्स अस इन दैट ओनली. So then we have podcasts. Now podcast is something that is emerging day by day. Podcast about skin care हो, hair care हो, anything. तो पॉडकास्ट भी एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो. एंड देन वी हैव केस स्टडीज. नाउ केस स्टडीज पुट रेलेवेंस इन आवर ब्रांडिंग कि लोग ऐसे देखते हैं कि सपोज आज मैंने बोला कि जो रिव्यूज होते हैं ना गूगल पे और व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट नीचे रिव्यूज होते हैं, वी मोस्टली सी द रिव्यू, द रेटिंग बिफोर एक्चुअली सीइंग द प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट आई डू. आई पुट द फिल्टर थिंग जिसपे वो 4.5 रेटिंग के अबव वाले प्रोडक्ट से दिखाते हैं. दैट्स व्हाट आई डू. सो दैट्स वेयर केस स्टडीज कम इन. केस स्टडीज हेल्प अस कि ऐसे चलो इसको बेनिफिट हुआ तो आई कैन रिलाई ऑन इट. एंड देन वी हैव न्यूज़लेटर्स. न्यूज़लेटर्स में like there's not much to say, like Instagram, LinkedIn पे algorithm के ऊपर थोड़ा सा खेलना and everything. That's how we use newsletter in this approach. So now coming to the next topic that will be done by Sriyansh. Okay, so guys, how to get found without paying for it. Okay, सबसे सिंपल लाइन है और इसी लाइन से पूरा SEO सम अप हो जा रहा है. How to get found without paying for it. ठीक है, सो पहले आप इस लाइन को सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिएगा. गूगल गेट्स 8.5 बिलियन सर्चेस एवरी सिंगल डे. 8.5 बिलियन सर्च आते हैं गूगल पे हर एक दिन. ठीक है, SEO इज हाउ यू मेक श्योर सम ऑफ दोज फाइंड यू. समझे? सब इस बात को समझे? ठीक है, गूगल में 8.5 मिलियन सर्चेस आ रहे हैं हर रोज एंड SEO इज व्हाट इंश्योर्स कि जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास आए. अब मैं इसको बहुत सिंपली बताता हूँ. ठीक है, अभी दिन के बज रहे हैं 12 बजे. ठीक है, और 1 घंटे के बाद लंच टाइम हो जाएगा एंड मैं लंच करने जाऊंगा. राइट, मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में. ओके, सो आई सर्च हियर गुड रेस्टोरेंट्स नियर मी, गुड फैमिली रेस्टोरेंट्स नियर मी, वेज फैमिली रेस्टोरेंट्स नियर मी. ठीक है, एंड मेरे को कुछ नाम आएंगे स्क्रीन पे. उसके बाद जो उस रेस्टोरेंट्स की जो साइट्स आएंगे ना, ऐसा क्या वजह होगा कि गोविंदास रेस्टोरेंट फर्स्ट पे रहेगा
सैम्स पिज्जा सेकंड पे रहेगा, लापिनोज थर्ड में रहेगा, एंड गजानन पोहा हाउस फोर्थ पे रहेगा। ऐसा क्या, उसके पीछे क्या वजह है, कोई मुझे बता सकता है? मतलब इसमें कुछ सोचने जैसा है भी नहीं, ऑफ कोर्स एसईओ की बात कर रहा हूं तो वही होगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द रीजन व्हाई व्हाट कम्स टू यू फर्स्ट कम्स टू यू द वेरी वे इट डज, ओके। इसके पीछे बहुत सारी टैक्टिक्स है, बट इसके जो तीन मेन पिलर्स हैं उस पर मैं बात करना पसंद करूंगा, ठीक है। फर्स्ट इज ऑन पेज, दैट इज व्हाट इज ऑन वेबसाइट, ठीक है, विच इज कीवर्ड्स लाइक मैच व्हाट पीपल एक्चुअली सर्च, ओके। उसमें आ जाएगा फिर देन आपका टाइटल टैग्स, हेडर्स, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट एंड इंटरनल लिंक्स। So this is basically right for humans first and Google second. This is your on page, okay. Then comes your off page, which is your reputation on the internet, ठीक है, which covers backlinks like other sites watching for yours and quality over quantity always वाला thing, right? And इसमें एक और बहुत बेहतरीन चीज है which is EEAT, which is EEAT मतलब experience, expertise, authoritativeness followed by trust, which is Google's quality check, okay. When I say ARC while talking to SEO, I'm not referring to the user but the one who is advertising. So उस बात की clarity रखना. The third pillar and the most essential one is the technicality, which is the behind the scenes stuff, okay. इसमें आ जाएगा आपका site speed, right? Then mobile friendliness, HTTPS, XML site mapping, and crawlability, right? Followed by the entities which are more of related or blended towards core web vitals like LCP, which is the load speed, CLS, visual stability, and FID, which is responsiveness. अभी आपने क्या बताया, LCP, CLS, FID, इसका पर्पस जो है वो मैंने आपको बता दिया, which is load speed, visual stability, and responsiveness. Okay, so to support the data, facts, figures which I talked about, two fascinating statistics will I put about, right? Which is the first one is that results on Google gets 27.6% of all clicks, okay, and second gets 15%. So page two gets almost nothing, right? And that is what makes SEO and its tactical methods more incentivizing, right? And every 1 second delay in load time reduces conversions by 7%. अब conversion क्या है? Be patient. Anvesha will talk about that while she says about CRO, which is eighth topic, if I'm not wrong. Yeah, right. So Anvesha will bat around what is conversion and the entities surrounding that. Okay, and it is very important. CRO is actually one of the most important topic in today's discussion. So was SEO. So I hope अभी तक आपको पता चल गया होगा कि what is SEO in the core crux of it, right? And to end it, let me say that SEO is slow, but it compounds. A blog post written today can bring you leads 3 years from now. And that is what SEO makes what it is, the brand, not just an entity. Anvesha, the next slide. सोशल मीडिया मार्केटिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज में इट इज द मार्केटिंग दैट यू डू थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सो अभी इसके डीप जाते हैं। Social media marketing is the process of using the social media platforms that we use every day, like Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, X, जो कि Twitter का नया नाम है, and TikTok, etc., to promote a brand, engage with customers, build a community, generate leads, and increase sale. Now, coming to social media marketing, अभी जो तुम देखते हो ना, ऐसे डूम स्क्रॉल करते करते ऐसे एक रील का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, यू वॉच दैट रील, भाई अगर लाइक कर दिया, नेक्स्ट टाइम से वो रील तुम्हें इतना बार आएगा, उस टॉपिक पे इतना बार आएगा, यू विल गो टू अनदर वेबसाइट्स, यू विल सी एड्स on it, you will go to Google search for match, you will see ad on it. तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बाय गॉड मैं बहुत फेस करती हूँ. So that is what social media marketing helps us in the whole marketing process, digital marketing process, right? Abhi, social media marketing has two approaches. One is organic marketing and second is paid marketing. Organic marketing is, it is completely free. Definition से ही पता चलता है. That is increasing your brand naturally.
नेचुरली बाय पोस्टिंग कंटेंट अबाउट इट, जो हम करते हैं, जो हम कॉलेज सोसाइटीज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे कि पोस्टिंग अबाउट आवर कंटेंट, व्हाट वी आर डूइंग, एवरीथिंग, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग. एंड पेड मार्केटिंग वुड बी पेइंग द प्लेटफॉर्म ताकि तुम्हारा पोस्ट बूस्ट हो जाए. जैसे इंस्टाग्राम पे वो वेरिफिकेशन बैच भी आता है, that's what I know of. I guess that costs around 79 to 89 per month if I'm not wrong. तो वो लेने से your content would be boosted up rather than others. अगर किसी के लाइक 10 लोगों के पास पहले आपका कंटेंट जाता है तो अभी 100 लोगों के पास जाएगा. सो दैट इज हाउ दे इंक्रीज द रीच सेगमेंट. अभी एक और एग्जांपल देखें तो जो श्रेयांश बोल रहा था रेस्टोरेंट वाला, सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग वुड बी अगर वो रेस्टोरेंट इज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर फूड आइटम्स और द सेल गोइंग ऑन अराउंड, और लाइक कस्टमर रिव्यूज जो होते हैं ना, अभी कस्टमर्स कोलैबोरेट करते हैं विद कैफेज एंड एवरीथिंग. So those are organic marketing. And if that restaurant is paying Instagram to boost their post, that is paid marketing. It's simple. Abhi other examples में we have Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. So I'm gonna talk about meta platforms. अभी मुझे जल्दी से बता दो मेटा प्लेटफॉर्म से में कौन कौन से ऐप आते हैं, जल्दी से. 3 तो आ ही जाएगा पक्का पक्का. हाँ, यस यस, और 2 है. हाँ, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक तो सभी को पता होता है. और भी अभी बहुत, हाँ, थ्रेड्स, यस राइट, गौरव दत्ता, हाँ, थ्रेड्स आता है, थ्रेड्स. एंड वी हैव मेटा एड्स मैनेजर फॉर एडवर्टाइजिंग अक्रॉस मेटा प्लेटफॉर्म्स. दैट इज, अभी मेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म में जैसे व्हाट डज इंस्टाग्राम डू. इंस्टाग्राम helps in attracting audiences and basically the audience pool is of younger people. अभी फेसबुक की बात करें तो अभी लोग बोलेंगे कि ओल्डर पीपल. नो, दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस इन फेसबुक. फेसबुक एक्चुअली हैज ऑप्शंस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी, और they have Facebook business जिस पे you can host events and they are more sort of the क्या बोले, टेक्निकल, थोड़ा सीरियस साइड. Instagram is भाई लाइट, ऐसे स्क्रॉल करो, जो भी पोस्ट करना है कर दो, लोगों तक आ ही जाएगा, अच्छे रेलेवेंट हैशटैग्स दे दो. दैट्स व्हाट Instagram does. WhatsApp पे you can convert the interested users who have come up to your WhatsApp community maybe to direct customers. That is what we can do through WhatsApp. WhatsApp पे जैसे कि सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ना, तुम लोगों ने भरे हो, तुम लोग आए हो WhatsApp ग्रुप पे, अभी इसके बाद से जो संडे स्पेशल का इवेंट होगा, you will directly get the notification of it, the link to it. So that is how WhatsApp is helping us in this marketing process. And then we have Meta Ad Manager, जिसमें everything is tied up. The whole ad managing sector is the parent company, you can say, that is Meta Ads Manager. So they are delivering the targeted advertisement across all of these platforms. Okay. Now this is all from my side for social media marketing. Abhi Shreyansh, to the next slide. Yes, starting with the topic of email and WhatsApp marketing. Okay, so यहाँ से कुछ लोग रील देख के आए हैं, कुछ लोग ईमेल से आए हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप से आए हैं, टेक्स्ट फॉरवर्ड से. Okay, so पहले let us take what is not just email but these two most distinctive yet relevant grounds. Okay, the two most direct lines to your audience, no algorithm in the way. This is email and WhatsApp. Okay, so the one line, if I would say to kickstart things in this very domain, in this very horizon, it would be the social media rents you an audience, email and WhatsApp owns it. Okay, social media rents you an audience but email and WhatsApp owns it. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, which I'll justify as I end this segment. Okay, firstly let me talk about email marketing and the basics of it. So basically, what is email marketing? Build a list with lead magnets. Okay, free guides, checklists, webinars in exchange for an email, just an email. Okay, then is your segment. Don't send everyone the same thing. Group by behavior, interest, purchase history, which is a part of our understanding our target audience, and accordingly we act tactically. Okay, so there might be a possibility that every year we mail, like first year को mail जाता है, second year को, third year को, but probably सबको same mail नहीं जाता है. Content and subject may be differ कर सकता है. Okay,
So this is about the segment, which is the another segment of email marketing. Perhaps I'd call it to be perhaps. Now coming on to automate. So this is something that we have not done so far. We do it while sending certificates, but not in any other capacity, which is welcome sequence, abandoned cart, and re-engagement, right? Followed by post-purchase, which is set once and run forever. Okay. So there are four particular types of emails that you need to know about, and we put on practice as the marketing PR team of a student society. Okay, which is first is newsletter, used for relationship building. Okay, with our participants, audience, whatever you call them to be. Then is promotional, which offers and campaigns. Second last is transactional, which is receipts and confirmation related entity. And at last, we have drip sequence, which is automated nurture over days or weeks. Drip sequence is more of related to what you'd call it to be adopted by big brands or big giants. Okay, हमारे जैसे student societies, I mean, कर सकते हैं, but it is tactically difficult. We'll see to it how we can incorporate that thing, right? Okay. Then the unsubscribe rate, which is kept generally below 0.5%, right? So जो cut off margin है ना, that is very high, making it a very beautiful and relevant commodity, right? The killer statistic that I should be saying is that email delivers rupees 3,000 return for every rupees 83 cent. Okay, the highest ROI of any digital channel, which is about $36, right? $36, which is a huge margin. आपने 83 रुपीज खर्च किया, आपको 3,000 वापस मिल रहे हैं. Okay, so if you do the calculations for that, you'll see what is the margin. Now coming on to WhatsApp marketing. So why does this matter? Okay, my friend Anvisha batted around a bit, but I'll just go in a bit depth of that what she talked about. And the fact is that 2.9 billion users are there in WhatsApp. Okay, and India alone has 500 million plus users. Huge market, very big commodity to serve, right? Average WhatsApp message open rate is 98%. A few individuals you'll find who don't open WhatsApp messages. Well, what can we say to them? But they are just 2% of the audience. 98% go for the WhatsApp message open rate, and which is comparatively that to emails 22%, right? And read within 3 minutes of delivery is an average of what you'll get to see. So the two modes of WhatsApp digital marketing, one is that WhatsApp business app, which is small business, manual messaging and quick replies, catalog managing. Take care. Then is WhatsApp business API. This is a bigger scale. Okay, scale automation chatbot, CRM integration used by brands like Zomato, Nykaa. But मैं इसका एक better example दूंगा. अभी IPL चल रहा था. Okay, and आपको वो Instagram पे ऐड नहीं आते थे, say hi on WhatsApp. So if you click on that, आपका WhatsApp पे सीधा मैसेज चला जाएगा. Like मैंने किया था वो चीज. I'm here at Gujarat, Ahmedabad. So I did that for Gujarat Titans. Okay, I sent hi. Okay, then बहुत सारे question पूछे. They asked for your email address, phone number, not many questions. Okay, and at last they said 3 lucky winners will get a ticket to witness the next match. They never get tickets. They never gave tickets. I've never got it probably, and that is why probably I complain likewise. But maybe few others do. Those who do, they are lucky. What do I say to Mela? Never mind. So that is also pretty much of what you had call it to be WhatsApp Business API, which is dealt with a larger scale. Okay, इसके लिए बहुत बड़ी companies deal करती है. And the thing that I earlier talked about was WhatsApp Business, right? So these are the two modes of marketing via WhatsApp. Okay, what you can send is that order confirmations and updates, promotional offers, which is opt-in. Okay, like Indigo से आता है ना, उसके लिए आपके पास कंसेंट लेके वो भेजते हैं. इफ यू टिक द बॉक्स तो ही आपको आएगा व्हाट्सएप पे, एल्स नॉट. ओके, अबॉर्डेड कार्ट रिमाइंडर्स, राइट? सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट कॉन्वर्सेशंस. अगेन इंडिगो इज द बेस्ट एग्जांपल टू दिस. लिटरली इंडिगो से हर कोई ट्रैवल करता ही होगा फ्लाइट से, राइट? इंडिगो वाला. सो उसमें आप हर इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ ना, आप उसे देख सकते हैं. टिकट बुक करते ही कंफर्मेशन आता है, ठीक है? एंड अगर आप प्रमोशन ऑफर्स को टिक करते हैं उस बॉक्स को,
then you get that, which is optional. Okay. Aborted cart reminders, अगर आपने टिकट बुक किया है बट पे नहीं किया इंडिगो के वेबसाइट से, so you'll get that notification. Okay. Customer support conversations after boarding a flight when you reach your destination. Within 6 hours, you get a message for the feedback. Okay. And the event reminders. एक दिन पहले आ जाता है ना व्हाट्सएप पे पूरा योर आइटिनरी वट एवर यू कॉल इट टू बी. सो दैट इज इवेंट रिमाइंडर्स. वेब चेक इन करने भी कहता है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, राइट. द गोल्डन रूल ओवर हियर इज दैट ऑलवेज गेट ऑप्ट इन फर्स्ट. WhatsApp penalizes unsolicited messages, which is too many block report actions, and your number gets banned. I wonder why these entities are not getting banned. For they are APIs, not business apps. So yeah, the key takeaway over here is that email nurtures over days, whereas WhatsApp converts in minutes. Perhaps use both. The next topic. अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू we're gonna see the whole thing. Okay, all right. Okay, tech with Shreyansh के साथ जाएंगे हम. Let's go with tech with Shreyansh. Suppose there's a tech society in our college, which is named Tech with Shreyansh. So उस पे you want membership. You want to promote a hackathon, suppose, which is gonna happen very soon, and you want to build a good brand. Tech with Shreyansh का brand बनाना है तुम्हें. सो नॉर्मली तो श्रेयांश को ही खड़ा कर देते हैं, बट अभी चलो लेट्स सी द मार्केटिंग साइड ऑफ इट. So first point here that we can see is build your Instagram page. That's the very first thing that we do. Maybe after making the website and after making the Google Forms जिससे लोग आएंगे, we just make the Instagram page जल्दी से and we start posting in it. We start posting. The first post mostly is the coming soon wala post ki coming soon, this is happening, it has already been started, we are doing a revolutionary something. That is how we attract audience, कि लोगों को भी लगे कि थोड़ा सा फोमो हो, लोगों को फोमो देना है हमें कि भाई मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हटके होगा, मुझे मिस आउट करना नहीं है, आई विल गो हियर एंड साइन इन. सो बिल्ड योर इंस्टाग्राम पेज. हम इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, उसका एक टारगेट फॉलोअर रखते हैं. दैट कैन बी डन थ्रू वेरियस वेज, वेरियस अप्रोचेस विच वी विल टॉक अबाउट अभी सून. सो वी पोस्ट पोस्टर्स जो हमारे UI UX टीम करते हैं. We post challenges, we can post like Q&As in stories, we can post polls ऐसे interact करने के लिए. Then we have WhatsApp broadcast list. What is that? Creating a broadcast channel for people who are joining in our society. जैसे कि एक होगा वेब डेव का डोमेन, एक होगा AIML का डोमेन, एक होगा मार्केटिंग का डोमेन, मार्केटिंग एंड PR, एक होगा UI UX का डोमेन, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हो गए, राइट. सो वी क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट चैनल ऑफ इट, एंड इन दैट चैनल वी पोस्ट रिमाइंडर्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, we post resources, we can speak to the members in that communities directly, जैसे हम communicate करते हैं. अगर suppose किसी को पता चला कोई hackathon के बारे में and they need members, we can post about it in that. Then we have email newsletters, collecting emails via Google form at the events. So emails लेना, उस emails में फिर follow up मेल्स जाएगा कि नेक्स्ट इवेंट के बारे में एंड एवरीथिंग. देन वी डू व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कंटेंट कैलेंडर. सो नॉर्मली व्हाट वी डू कि जब भी इवेंट आएगा उसके 5 दिन पहले कॉलेजेस लाइक द सोसाइटी वुड ऐसे जाग के बैठेगा कि आज चलो वो मार्केट करना है, आज मुझे कंटेंट बनाना है, आज रील पोस्ट करना है, कल पोस्टर पोस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इवेंट. But making a proper content calendar to do the things, to plan everything, that helps a lot. ठीक है. Content is not just कि जब कोई इवेंट होगा उससे पहले पोस्ट करना. Content should be हर वक्त का थिंग. It should be posted like at a good average time. कैसे कि सपोज कोई एक आदमी है, कोई इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, दे हैव दिस चार्ट, ठीक है, एनालिटिक्स में दिखता है कि किस टाइम पे, किस दिन के किस टाइम पे यू गेट द मोस्ट रीच. उसी दिन उसी टाइम पे दे पोस्ट अ कंटेंट, कुछ भी.
कुछ भी हो जाए they post, they maintain the वो good, हाँ, consistency beats perfection, right हेमंत? So that is what is very much needed. So इसके लिए content calendar is used. We can plan out the contents. जैसे कि मुझे OCD है, ठीक है, I have to have good planning in everything. So content calendar is something that I am very much towards, I am very much into, ठीक है. And then we have LinkedIn for credibility. LinkedIn is basically जिस पे थोड़ा सा टेक साइट जाएगा, जिस पे हम हैकाथॉन के बारे में पोस्ट करेंगे, जिस पे हम रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे मेंबर्स को कि यू पोस्ट अबाउट द हैकाथॉन, whatever project that you have made, you post about it, then they will also get the reach, and alongside we will also get the reach. And then we have event promotion. अभी सब जो मैं बोल रही थी हैकाथॉन का सपोज इवेंट है, we will promote this event. Now for promoting this event we will stand with standees कॉलेज के उधर, वी विल डू ऑफलाइन मार्केटिंग, वी विल डू ऑनलाइन मार्केटिंग. हम दोस्तों को बोलेंगे कि चलो गाइस हैकाथॉन हो रहा है, लेट्स पार्टिसिपेट, और टीम ऑफ 4 वी विल पार्टिसिपेट, वी विल डू दिस एंड दिस. और वो 4 लोग और 4 लोगों को बोलेंगे, वो 4 लोग और 4 लोगों को, ऐसे में स्प्रेड इवेंट ताकि वो सबके पास पहुंचे. सो दैट इज हाउ कॉलेज सोसाइटी मार्केटिंग वर्क्स बेसिकली. कि पहले हम इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, कंटेंट पोस्ट करना चालू करते हैं, देन वी मेक द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, देन वी स्टार्ट मेलिंग द पीपल, देन वी मेक द कंटेंट कैलेंडर टू पोस्ट कंसिस्टेंट कंटेंट इन इट, देन वी मेक द लिंक्डइन अकाउंट, उसमें भी पोस्ट करना चालू कर देते हैं अबाउट द हैकाथॉन. अभी लास्ट में इवेंट प्रमोशन, एकदम स्पेसिफिक इवेंट रिलेटेड पोस्ट उसके बाद जाता है. So this is how the whole college society marketing works, and this is basically how we work as well as a society. So now on the next topic, paid advertising in PPC programmatics. अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ गया है, राइट? कि व्हाट इज PPC. पेड एडवर्टाइजिंग तो आई हैव सेड ऑलरेडी कि पेड एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है. जो ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, जिससे यू आर पेइंग द प्लेटफॉर्म टू शो योर content more, like boost it up, right? That was paid advertising. Abhi what is PPC? PPC ka full form is pay per click. What does that mean? PPC means you pay only when someone clicks your advertisement. तो इससे क्या हेल्प होता है कि यू आर नॉट पेइंग फॉर द होल कंटेंट और अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट यू डोंट हैव टू डू. PPC के थ्रू सपोज 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से 10 लोग आपको लाइक दे हैव क्लिक्ड ऑन योर एडवर्टाइजमेंट, तो फिर यू ओनली हैव टू पे फॉर दोज 10 clicks only. You don't have to pay for those 980 clicks, like 980 people left, right? So this helps brands in saving a bit money. This helps in getting a good data एक्चुअली, कि कितने लोग एक्चुअली आ रहे हैं, कितना फुटफॉल है हमारे एडवर्टाइजमेंट में, कितना वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. सो जो एग्जांपल मैं बोली, सपोज द कॉस्ट ऑफ दैट पर क्लिक, yes, we get our target audience, right, Aishani? So suppose the cost per click in the example that I have given was 20 rupees, very less amount. तो हमें कितना देना पड़ेगा? वी वुड ओनली हैव टू गिव, 20 लोग आए थे, 20 रुपीज 400. कितना खर्चा कम हो सकता है? वी डोंट हैव टू पे नाउ फॉर दोज 980 पीपल. कितना बजट वी हैव मिनिमाइज्ड. सो दिस हेल्प्स ब्रांड्स अ लॉट, एंड this is why this is emerging. This is why this is very important for people to know if they are wanting to promote their brands, if they are wanting to promote their product, they should know about PPC. Now second, we have programmatic advertising. अब what is programmatic advertising? इधर तो बहुत बुकिश वे में लिखा है, automated buying of ad space across millions of websites using AI in real life. कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था. So instead of manually buying and buying ad space from websites, we use AI and algorithms to automatically buy and place ads to the people that we are wanting to target. So let's take an example.
सपोज यू आर सर्चिंग फॉर अ शू, सपोज नाइकी का जूता खरीदना है किसी को, सो लेटर यू विजिट अ न्यूज वेबसाइट कि क्या चल रहा है, हाल चाल देखना है, एंड सडनली यू आर सीइंग दैट शू एडवर्टाइजिंग. दैट इज मोस्टली द वर्क ऑफ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, जो मैं बोली ना. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ये जो कुकीज आता है ना वेबसाइट्स पे कि एक्सेप्ट द कुकीज, रिजेक्ट, मैं तो पहले सब एक्सेप्ट ऑल कर देती थी. आई डिड नॉट नो अबाउट दिस. वेरी लेटर ऑन इन माई लाइफ आई गॉट टू नो कि ये कुकीज कुछ अच्छा चीज नहीं है, मतलब ये बुरा भी नहीं है, बट दे आर बेसिकली टेकिंग ट्रेसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर पुटिंग इन, एंड ये ना शेयर होता है जैसे नॉट इन अ हार्मफुल वे, बट द इंफॉर्मेशन, सपोज एक वेबसाइट पे जाके यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, हाउ डज अनदर ऐप ऑफ योर फोन इज गेटिंग टू नो? दैट इज स्कैरी. आई यूज टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस. सो दैट इज बेसिकली द वर्क ऑफ वेबसाइट्स जो करते हैं ये लोग. दिस थिंग, दिस इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग. ओके, ना प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का भी रिजल्ट होता है, नहीं तो रीटारगेटिंग का भी रिजल्ट होता है. रीटारगेटिंग इज one of the Meta's strongest feature. That is like Meta is using it to next level. ठीक है, suppose you visit Amazon, you don't buy the shoe, you see it, you search for it, but you're not buying. Next day Instagram पे you're gonna see that same shoe that you clicked on. That is retargeting. That is to like, they are thinking it in a way that you might buy it, you might kabhi na kabhi to you're gonna buy it because you searched for it. So they are retargeting, they are keeping that audience pull to themselves. नाउ इन दिस वी हैव गूगल सर्च एड्स. गूगल सर्च एड्स तो गूगल में जब भी हम कुछ कंटेंट देखते हैं जो एड्स बाजू में आता है ना, दैट इज गूगल सर्च एड्स. वी हैव मेटा और एफबी एंड आईजी एड्स, इट्स ऑल अंडर मेटा एड्स. सो मेटा एड्स में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन वो यूट्यूब, इन सब में जो हम एड्स देखते हैं, इट्स ऑल कमिंग अंडर दिस. And we have display ads. Display ads are the image or banner advertisements shown across websites. थोड़ा सा like, suppose you're reading a cricket article and on the side you're seeing a data science course, that is display ads. Okay, and display ads and Google search ads are more or less the same thing, but yeah. So this is for from my side. Okay, Shreyansh. We are on analytics and data driven marketing. ठीक है, अंधाधुन मार्केटिंग करके कोई मतलब नहीं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ होल डिजायरेबल कमोडिटी. व्हाट? एनालिटिक्स. वी हैव सर्टेन स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी गेट वाया टूल्स. ओके, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स. ओके, उसके बेसिस पे those tools are itself equipped to do their set of analysis. We can do that other way as well. Okay, in fact after the analysis as well there is the secondary stage of analysis that takes place. Okay, and on the basis of that analysis we make an action plan which we follow while executing the thing that we plan out. Okay, and data driven marketing. So data driven marketing, the line between analytics and data driven marketing is very thin. So the analytics that you do, on the basis of that data you make your action plan. Perhaps this all in all becomes a very very desirable commodity. Now if you can't measure it, you can't prove it, you can't improve it, right? So measuring it is very important, because only then you can work upon it and advance it, right? So data doesn't tell you what to do, it tells you what's actually happening, so you stop guessing. Okay, the core tool over here that we are going to talk about is GA4, that is Google Analytics 4, which tracks who visits your website. Okay, where they came from, what they did, and whether they converted or not. Okay, what is converted वो मैं इसी में समझा दूंगा, just थोड़ा सा wait. Okay, then what it does is set up events like actions users take and conversions, the ones that matter to your business. ठीक है, conversions और थोड़ा बात करेंगे इस पे. Last thing that it does is use Google Tag Manager to add tracking without touching website code. Okay, so इसमें accessibility बढ़ जाता है and time invested becomes very less. Okay, making it very efficient. Then let us talk about the metrics that actually matter
under this whole commodity. Okay, metric, what it tells you is as follows: traffic by source. Okay, which channel is sending you visitors, that is your traffic by source. Then comes your bounce rate, which is are people leaving immediately. अंडर 40% है तो फिर ग्रेट, नहीं तो थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है. बाउंस रेट, कितने लोग आपका वेबसाइट इमीडिएटली लीव कर दे रहे, ठीक है. एंड देन कम्स कन्वर्जन रेट, which means the percentage of visitors completing your goal or what you desire, what you want. How many people are serving that commodity is what you call it to be conversion rate or conversion ratio. Okay. Then two very important terms. Okay. CAC and CLV. CLV को you can call also it to be LTV. पहले CAC पे बात करते हैं. CAC और customer acquisition cost. Okay. Is the cost to acquire one customer. यानी कि give me a name, Rishikesh. Okay. I am a brand. Okay. I am a CMO. If I have to acquire Rishikesh, okay, via any mode of digital marketing, I put N money. Okay. That N money is my CAC. And what is CLV or LTV is the lifetime value. As in, अगर मैंने इस पे N rupees लगाया and he stays connected with me for T time, so मेरे लिए बेनिफिट क्या है? पैसा एक बार लगाया, कस्टमर हमेशा के लिए जुड़ गया, ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं हर बार कस्टमर पे नया पैसा लगाऊं एंड उसको रिटेन करने के लिए थोड़ा बेयर मिनिमम एफर्ट ना डालूं, तो फिर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है. सी दिस इज वेरी सिंपल. ओके, मैं बहुत सिंपली बताता हूँ ये चीज को. लीड वर्स का लेवल 1 हुआ, सॉरी सीजन 1 लेवल 1 हुआ, ठीक है. कुछ लोग वहां आए, हमने उनको रिटेन किया. लेवल 2 में हमने और लोग को लाया सेशन में, हमने उनको भी रिटेन किया. लेवल 3 में और लोग भी आए, हमने उनको भी रिटेन किया. सो हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू वी रिटेन पीपल, बिकॉज हर बार नया एफर्ट डाल के नए लोग को लाने से अच्छा है जो पहली बार आ गए थे ना उनको रख लो. एंड एक और इसका बहुत रियल एग्जांपल है. दिस इज नॉट रिगार्डिंग प्रोडक्ट बट सर्विस. ओके, मेडिकल सर्विस मोर पर्टिकुलरली. व्हेन आई वाज 6 months old, I suffered severe pneumonia. Okay, so I went to a doctor. Okay, the doctor treated me very well, and I got well within 6 days. Okay, उसके बाद when I was 2, again कुछ हुआ, मैं उनके पास गया, like serious सर्दी जुकाम बुखार तो हमेशा होता है मुझे. देन जब मैं 6 साल का था फिर से कुछ हुआ, 10 साल का था फिर से कुछ हुआ, 12 का था फिर से हुआ, 14 का था तब हुआ, 18 का था तब हुआ. एंड उस डॉक्टर के लिए पता है प्लस पॉइंट क्या था? उसने शायद से मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक बार कुछ पैसा लगाया होगा. लाइक उसने शायद से कोई पोस्टर लगा दिया था रोड पे, डॉक्टर विवेक उपल, ये हॉस्पिटल, ठीक है. मैंने वो पोस्टर को देख लिया, मतलब मेरे पेरेंट्स, ओके, वो मेरे को वहां ले गए. एंड देन उसने अच्छे सर्विस से मुझे रिटेन किया. ओके, सो उसने मेरे को पूरा लाइफ टाइम ही रिटेन कर दिया. अब वही मेरा फैमिली डॉक्टर बन गया, ठीक है. फैमिली डॉक्टर यानी माय गो टू डॉक्टर. ओके, सिमिलरली जो मेरा सिबलिंग हुआ, हम उसको भी वहीं पे ले गए बिकॉज हमारा एक ट्रस्ट आ गया. सो उसने पैसा एक बार लगाया एंड हमको रिटेन कर लिया. रादर देन द मोर डिफिकल्ट थिंग वाज, वो एक बार हम पे पैसा लगाए, हम एक बार जाए, ठीक है, तो उसका अगर पैसा लगा 20 रुपए और उसने हमसे लिए 200 रुपए, ज्यादा एफिशिएंट पता है क्या है? उसी 20 रुपए पे वो हमको पूरा लाइफ टाइम रख ले. सो दिस इज CAC. काफी डेप्थ में समझाने की कोशिश किया है, सॉरी LTV. ओके, and it is very much interrelated, CAC and CLV. Okay, last metric over here is ROS, which talks about revenue earned per rupee spent on ads. Okay, ये भी एक बहुत important entity है in terms of digital marketing. Okay, as whole. Then the CLV ratio with CAC rule, which everyone must know. That is, if CLV is 3:1 to CAC, then you are losing money. Fixed before scaling it, right? If it's 5:1, like CLV is 5 for 1 CAC, pour fuel out of the fire. Okay, you are doing good, all good to go. And the attribution part that I should be talking about, which is a tricky thing. Okay, it is that a customer sees your Instagram ad, Googles you, clicks on an email link, buys. Okay, which channel gets credited? Which channel gets the credit? That is attribution. Okay, that is data driven attribution, which is
GA4's default. Splits credit intelligently across all the touch points. Right. Very important entity, very important. Okay. Attribution. उसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग. सो ए बी टेस्टिंग क्या है? काफी कंपनीज, काफी ब्रांड्स इस चीज को अपनाती है अपने प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली डिस्प्ले करने के लिए, मार्केट करने के लिए डिजिटली. ओके. This is show version A to 50% of users. Okay. Then show version B to the other 50%. Okay. Wait for 95% statistical significance before deciding a winner. Once that happens, test one thing at a time, always. And accordingly, decide whom are you willing to go with. Very simple, very explanatory. Okay. That was A/B testing, which many companies follow. And Alibaba is the prime example of that. Okay. Then let me come to key takeaways of this very segment, which is that the best marketers are not the most creative ones, but they are the most curious about their data. Perhaps analytics and data driven marketing becomes such an important entity, a diaspora, which you can't miss upon. Okay, it's very simple thing. ज़्यादा कुछ इसमें बताना दिखाना है नहीं, समझना भी नहीं है. This is GA4 का interface. Okay, just to familiarize you with how the entire tactics works. Okay, so आपको statistical graph मिल जाएगा, which is the data on which you are doing the analysis. So first वाले पे you can see users per minute, every scale पे it is showing. Okay, users in last 30 minutes is 65. So this is analysis plus data. Okay, data is the figure and analysis is the fact on the basis of that figure. Okay, and last one page, as you can see, the snapshots of the reports. Okay, which tells you data, which is your active number of users, new users, and average engagement. So this is about GA4, Google Analytics 4, which many entities use for effectively marketing in a digital medium. Right? CRO क्या है? In very simple words, CRO is instead of getting more traffic, you make better use of the already existing traffic. So what is this? Think of it as like suppose 100 people are showing up to your website. Out of that, only 2 people are buying your product. Now you have 98 people left. Instead of spending more money to attract more 100 people, CRO focuses on the fact that you have to make your website better in certain ways so that you can retain more 5 to 10 people from that 98 people ka pool, so that your retention rate at the end of the day can be good, taki you're not losing more people or losing more money. So now that is what the whole concept of CRO is, conversion rate optimization. Now what is conversion in this? Conversion is any action that you do in order to wanting a visitor to come to your platform. That can be like conversion can be like buying a product, filling a registration form, signing up websites के लिए signing up, फिर ऐप डाउनलोड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, डाउनलोडिंग एन ऐप, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट दोज एडवर्टाइजमेंट्स यू आर redirected to downloading the app in Play Store, right? Play Store or App Store, whatever. So now examples we have Amazon के लिए the conversion is purchase. Amazon में people have to purchase things in order to do the whole action. And for Netflix we have the conversion is subscription, buying the subscription basically. For a college the conversion is filling up the admission form or filling up the form for any event that is coming up. And for our leaders we have student registration as conversion. So this is the like क्या तुम गेन कर रहे हो इससे, कितने लोगों को गेन करवा सकते हो थ्रू दिस इज कन्वर्जन. नाउ व्हाई CRO इज इम्पॉर्टेंट? इमेजिन अ सिचुएशन, एक वेबसाइट पे लाइक जो A/B टेस्टिंग श्रेयांश स्पोक अबाउट, सपोज ए वेबसाइट पे the number of visitors are 10,000, the conversion rate is 2%. 2% people are actually doing something in the website. They are visiting, and those 2% people have actually filled the form.
then the number of conversion would be 10,000 into 2%, that is 200 customers. And now let's improve the website thoda sa. That is CRO. Improving the website, that part is CRO. Okay. Now after improving, this is website B. इसमें भी 10,000 visitors आए हैं, but now the conversion rate is 5%. So the number of conversions that we get now is 500 customers. So that is how, by the existing traffic, you have pulled more people in, more people to be attracted by your product or the service that you're providing. How many more? You have gained 300 more customers. So that is CRO. CRO basically, it works upon this fact that small improvements equals big revenue gains. Now the formula for conversion rate is, it is given there. It is, conversion rate is number of conversions divided by total visitors into 100. Simple maths, nothing much. Now I have a question for you. If you have understood the whole thing, I want to check that. So the question is, suppose you have put an Instagram ad. Okay, listen carefully, everyone. Suppose you have put an Instagram ad, usme 1,000 people have visited your website. 1,000 people have visited your website. इसमें से 200 people have clicked the register button, and उसमें से फिर 80 people have filled the form. उस 200 में से 80 people have filled the form, and उस 80 people में से 50 people have completed the payment. Now give me the final conversion percentage, the conversion rate. 0.05. 0.05%. Okay. Let's get back to the topic. CRO में we have 6 components here. We have landing page optimization. What is that? What is landing page? First of all, whenever you click a advertisement or a link, the first page that pops up in your screen, that is the landing page of that website, of that particular website or the particular app. So उसमें you should have clear cut information. एकदम clarification रखो, क्या content तुम्हें देना है, क्या तुम बताना चाहते हो. उसमें you should put the register button or the sign in button or the fill this form button in such a place जहाँ पे लोग देख सके. People should not have to be searching the whole website to find that. That is, then you cannot retain your audiences. Next is UX design. Abhi UX is user experience and design. UX basically says how easy and pleasant it is for users to use your website or app. Here we have our UX, UI, UX team members also. They can say better than me. So yeah. Then we have trust signals. Now, we have to gain the trust of the audience that we are trying to approach. कैसे वो कर सकते हैं? We can put relevant posts, we can put reviews, we can post case studies. Those helps. जो मैं बोली थी पहले भी, for people to actually trust in the website or for people to actually trust in the product that you're trying to sell. Then we have psychological triggers. Psychological triggers जो ये भी मैं पहले बोली थी कि जैसे people use ना 3 seats left, 500 registrations done for today, ऐसे ना लोगों को फोमो हो जाता है कि भाई मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ. आई नीड टू रजिस्टर इन दिस टू एक्चुअली नो व्हाट आई एम मिसिंग आउट ऑन द, कि इतने लोग आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, व्हाई एम आई द ओनली वन लेफ्ट आउट, राइट? So this is how you can kind of play with the psychological part. Then we have CTA optimization. CTA means call to action. It tells the user actually what to do. What is your point of selling the product? CTA में we have Google form का वो submit register now का button. CTA में we have fill this form का button. That is basically what you have to do, right? Then we have form simplification. The form should be simplified. A research and everything says, and a normal human brain only says this, कि लोग ना बड़े बड़े फॉर्म्स नहीं फिल करते, इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता लोगों पे. दे वांट एकदम सिंपल मिनिमलिस्ट फॉर्म्स फॉर देम टू बी फिलिंग आउट. Abhi, one of the most important CRO technique is A/B testing, which Shreyansh has already covered, so I'm not going to cover that again. So
जैसे कि सपोज ए वेबसाइट पे ऐसे हुआ था और उसका सीआरओ कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके यू गेट द बी वेबसाइट एंड द बी वेबसाइट रिटेन्स मोर कस्टमर्स. That is when you choose the B website for your whole product marketing and everything. So now for the next slide, Shreyansh. Marketing automation and CRM. Okay. So scale your marketing without scaling your team is what is the purpose, the agenda of marketing automation and CRM, right? Automation is something which lets you send the right message to the right person at the right time without being awake at 3 a.m. to do it. Okay. So this is what automation gives you, okay, which is very popular in fashion, right? And CRM, customer relationship management. It is perhaps a system that stores every interaction with every lead and customer. Okay, tracks where they are in the sales funnel, like first contact or interested, then proposal, yes or no at the final stage, and the popular tools for CRM, customer relationship management, you would call it to be HubSpot, Zoho, Salesforce, right? Think of CRM as it's your business memory. Okay, so nothing falls through the cracks, right? And coming on to marketing automation, what it actually does: sending emails, WhatsApp based on triggers, not calendars, right? Scores lead automatically. ये जो मैं जो IPL वाला example दिया, that is pretty much of what marketing automation does. Okay, scores leads automatically. More on this below. Okay, moves leads through your funnel without manual effort. Okay, so it is basically you have to invest in, okay, monitor 10% of it and get 10 times the result, and that is what makes marketing automation very incentivizing, right? Now coming on to lead scoring, so we'll try to explain this very simply. Okay, imagine you give points to a lead every time they do something. Okay, opened your email plus 5, visited your pricing tags plus 15. Okay, downloaded your guide plus 10. Okay, then attended a webinar plus 20. When their score crosses 50, the sales get notified. That's a lead scoring. Okay, so that stops sale from chasing leads. Okay, which means hot leads never get ignored. So that is a very big plus point of using these tools in terms of strategizing and marketing in automation grounds. Okay, along with CRM practice, right? The key automation workflows in every business needs a welcome sequence, like new subscriber gets 3 to 5 emails over 7 days introducing the brand. Okay, so that they get to know a taste of what they are serving in real. Then is abandoned cart. User added to cart but did buy that product. Okay, so automated reminder after 1 hour or 24 hours or 72 hours, however you fix it to be. Then is re-engagement, which is if inactive for 90 days, you'll come up with a "We Miss You" campaign. Okay, uh, and then at last we have post purchase, which is thank you, review request, upsell, loyalty, something like that. The stat to share here, which is quite incentivizing and peculiar in nature, is that companies using marketing automation see 14.5% increase in sales productivity and 12.2% reduction in marketing overhead, which I was just talking about. डालना कम है, मिलना ज़्यादा है, right? And the tools that I can mention for the aforementioned topic is that for HubSpot is for all-in-one CRM plus automation. Okay, and it is very easy to use. It's more recommended for the beginners, right? And then we have Klaviyo, which is email plus SMS automation, best for e-commerce. Okay, then we have Active Campaign, which is powerful automation for any business. And then is Zapier, which connects all your tools without code. Okay, so the key takeaway from this very segment is that automation is not about removing the human touch. It's about making sure every human gets the right touch at exactly the right moment. Okay. So this is the last part, digital marketing strategy, the full funnel. Now what is a funnel? What is a marketing funnel? अभी funnel बहुत बार किए हैं हम, but we did not actually see what funnel actually is. So marketing funnel
is the path a customer follows before and after making a purchase. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, you hear about a new hackathon or a coding competition, right? Then you visit their Instagram page of that particular society or of that particular, अगर वो coding का they have made another Instagram page, whatever, you visit that. Then you watch some videos for reference कि कैसा क्या होता है, what is this, what they are actually doing and everything. Then you visit their website to register. Then you compare it with the present competitors they have. वो बहुत important है, comparing. हम compare करते हैं actually. Before buying a product, we compare it with many different products, right? So we compare it with the competitors, and then finally, if you feel that this boot camp or this hackathon is going to help you more than the other competitors in the market, you register. And then you receive the mails, and then the whole marketing process, wo email wala WhatsApp marketing comes into play. So this entire journey is the marketing funnel. The whole, you can say, the roadmap of how you're going in, how you're registering, ekdam last point tak ka. That is marketing funnel. Now, here in the marketing funnel steps, first we have awareness. Awareness matlab the first and foremost step is to know about the product. Is people, the audience should know what you're trying to sell, what you're trying to give to the people. So awareness hona. That is done through SEOs. So that is done through social media marketing helps in that, digital marketing helps in that, content marketing helps in that. जो basically जो first segment हमारा था, that was basically battling around the fact of the awareness part. Awareness में you first get to know about the product, you get to know about the company that is selling the product, and that's it. Then comes interest. So you have gotten to know every information, सब पता है तुम्हें क्या product है, क्या company है, everything. Now, are you interested in using that? Are you interested in buying that? That is what interest is. You need to hold the interest of the audience to actually, in order for them to buy the product, go ahead and buy the product. They should be interested enough. अगर नहीं तो interest lose कर दे, then what's the point of all this? What's the point of spending money in paid advertising, in doing all this advertising या ऐसा कुछ, if they're not even interested, if you are not able to hook the interest on them? Then we have consideration. अभी audience क्या करते हैं? After ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, आई माइट बाय दिस, अभी वो कंसिडर करने के स्टेज पे होते हैं, दैट आई एम कंसिडरिंग शुड आई बाय दिस. एक डूज एंड डोंट्स का लिस्ट कि ये हो सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये खरीदने से ये होगा वो होगा, हम सब कंसिडर करते हैं. वी थिंक अ लॉट बिफोर बाइंग. अगर तुम इम्पल्सिव बायर नहीं हो तो यू डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग, राइट? कंसिडरेशन पार्ट में कि what benefits am I actually gonna get? You see the other competitors as well कि क्या सब कैसे क्या कर रहे हैं, is this product gonna help me, everything. And then conversion में you convert that consideration into actually going on and buying that, going on and taking that. कि आई वॉज थिंकिंग कि इस बूट कैंप पे करूँ या ना करूँ, लीडवर्स पे आऊँ या ना आऊँ. वी कंसिडर्ड एंड वी सॉ द पोस्ट. पहले कंसिडरेशन आया था जब मेल आया था कि चलो एक मेल आया, ओके सम इवेंट इज हैपनिंग, बट आई एम कंसिडरिंग, लेट्स सी कि करना है या नहीं करना है. देन वी सी अ पोस्ट कि कोई दोस्त के स्टोरी पे पोस्ट देख लिया कि oh okay, this is happening on Sunday at 11:30, this is the topic, okay so should I do it? फिर से considering state पे you are thinking कि should I do it? अभी वो जब you decide कि नहीं चलो कर ही लेते हैं, कि तुम्हारे कोई दोस्त ने बोला कि चलो कर ले भाई, थोड़ा सा हो जाएगा, आजा आजा सीख लेंगे कुछ, that is when conversion is happening, converting the consideration into actual result. एंड देन वी हैव रिटेंशन. अभी जो ऑडियंस पुल हम गैदर किए हैं, उस ऑडियंस पुल को वी हैव टू कीप विथ अस, वो रिटेन करके रखना है. वी ऑलरेडी हैव सपोज अ पुल ऑफ 1000 पीपल.
अभी उन 1000 पीपल को कैसे हम 1000 ही रख पाए, दैट इज अ ह्यूज फोकस, दैट शुड बी द मेन फोकस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज, क्योंकि नए लोग लाने में बहुत पैसा जाता है, एंड नए नए लोग लाना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, यू नो। ये पूरा पहले का 4 स्टेप यू हैव टू कंप्लीट टू एक्चुअली गेट टू द फिफ्थ स्टेप, but when you are already standing on the fifth step of this whole funnel part, you, if you can retain the audience rightfully, then you don't have to follow the whole 4 steps again to bring more people, right? So this is why retention is very very important in this. अब ये केस स्टडी करते हैं, हम केस स्टडी के बारे में पता भी किया है कि इससे we get to know about the company and the brand. So इस केस स्टडी पे we are going to talk about Zomato. अभी what's the first thing you think of when you like hear the name Zomato? Not खाना, खाने का नाम मत लेना, not the food, something related to their advertising strategy. What's the first thing you think of when you hear Zomato? एडवर्टाइजिंग की साइड पे, डिजिटल मार्केटिंग की साइड पे। हाँ, प्यार नहीं करते, क्या नहीं करते, हर्ट करते ऐसे बहुत कुछ आते हैं इनका। सो जोमेटो एज अ कंपनी, वी आर गोना नो अ वेरी लिटिल अबाउट जोमेटो। जोमेटो वाज फाउंडेड इन 2008 इन इंडिया, ठीक है, and over time it transformed into one of the India's largest food delivery platforms. Today millions of people use Zomato every day. मैं खुद 2 दिन में 2-3 बार तो खोलती ही हूँ, अगर खरीदना भी नहीं है मैं खोलती हूँ just to see the food and everything. But I want to like tell you कि ऐसे सोचो, जोमेटो के तो इतने सारे competitors हैं, the biggest one being Swiggy, right? Abhi Zepto bhi khula hai. Zepto is doing really good in its sector. So what makes people actually remember Zomato? The answer to this is what you everyone told, that is excellent digital marketing strategy that they use, that they implement on putting those notifications, on those funky texts, on those funny ऐसे कि अरे तुम लोग क्या बिरयानी से ब्रेकअप कर दिए, things like those. Yes, Zomato does this, and that is how they retain their audiences. प्राइस, हाँ, जोमेटो प्राइस पॉइंट पे हम नहीं जाते, प्राइस पॉइंट इज समथिंग दैट दे आर डूइंग ऑन देयर ओन, एंड प्राइस पॉइंट जोमेटो पे और स्विगी पे यू कैन नॉट रियली put the app in the play, right? like it is not static. Okay. Exactly, it is the restaurant's price, they just keep some share of it. Okay, now Zomato does not behave like a typical company on social media. What they do is, instead of saying order the food now, there's a sale going on, they create some funny content. जैसे कि I have written down one example. Suppose India wins a cricket match, instead of posting order now, they would post celebrating, your kitchen deserves a holiday too. See, instantly you just get the wish to at least look at the food item once, or at least like share that screenshot in your stories saying bhai ye to kitna maza hai, show it to your people around you. That is what Zomato does, that is their marketing strategy, and that is like, that has helped them to be in the market for so long and so strong. Like, instant discounts on every, yes, they also do this, the 6 minute ka 6 minute sixer आए तो 6 minute का सेल आता है, yes, yes. Now when normal notifications look like new offer or order, now Zomato has done this huge marketing strategy. Now their social media तो इस पे आ जाता है, social media mastery, they have boosted social media. Collaborating with creators helps. A new user जो ऑर्गेनिक रीच होता है ना, जैसे कि एकदम एकदम बेसिक कोई with 1000 follower, if someone is posting about Zomato and if Zomato is reposting that helps. पता है, audiences know कि content creators तो देंगे ही, they have a fair share in that, they're gonna post about it. But someone who has like 1000 followers, who is not even a content creator, if they are posting and Zomato is reposting that, Zomato does this. I have seen myself multiple times Zomato posting ऐसे ही कोई is
कुछ तो ऑर्डर किया था, आई गेस सम आइसक्रीम, दैट होको का आइसक्रीम इज बीइंग वेरी फेमस, तो ऐसा कुछ तो था, एंड जोमेटो रीपोस्टेड इट, एंड जोमेटो कमेंट्स इन एवरी पोस्ट, देखना कोई भी अगर ट्रेंडिंग कुछ है ना, जोमेटो कमेंट्स इन इट with some again funny, yeah. So they have mastered the social media sector very well. Then we have hyper personalized email करते हैं, WhatsApp texts पे फिर से देना कि I know this hurts to a lot extent, but anyways, hyper personalized emails देना, WhatsApp पे फिर से follow up text देना कि अरे भूल गए क्या, मुझे भूल गए क्या, सनम वनम, ऐसा कितना कुछ देते हैं वो. This is their whole marketing strategy. And the biggest lesson that we are taking from Zomato is successful digital marketing is it is not just about posting content every day or spending huge amounts on ads. It can be also by actually putting audience in the way कि उनके साथ दोस्तों जैसा बात करना. That is what Zomato is doing. Zomato is trying to do, and they are doing wonders in that. Wahi. So this is what we are learning from this, that don't just sell your product, create experiences and conversations that people want to engage with and that people will remember. it. How to market a company from basics to growth. Okay. So example में है कुछ that is, let us take that to consideration. Okay, CloudFit, a new fitness startup app. Okay, budget 50,000 है हर एक महीने का, ठीक है. टीम में 3 लोग हैं, राइट. अब मार्केटिंग इंजन बनाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है. ग्राउंड लेवल से देखते हैं कि कैसे फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को. सो जैसे अन्वेषा ने कहा था 3 स्टेज के बारे में, फनल्स के बारे में. ओके, तो हम इसको 3 फनल में तोड़ देते हैं. ओके, टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, ठीक है. अब इसमें द थिंग इज कि most people are centric towards bottom of funnel, but the game is played on the top of funnel. Okay, and those who are actually more good at the top of the funnel level are the ones who are standing out. Okay, so let us walk through all of that. Okay, so for the first 2 months, okay, we'll build upon the foundation, which is the top of the funnel. Okay, setting up the website, Google My Business. Okay, create those Instagram, just set it up, just be out there. Okay, then the phase 2, which is grow organically. पहले आप क्या करिए, पहले आप establish होइए, ठीक है, digitally establish होइए, not as an entity but digitally become something. Okay, do that for a month or 2. हर प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, पूरा जितना फैल सकते हैं फैल जाइए, ठीक है. उसके बाद वो कैन प्रायोरिटाइज कि शायद से इंस्टाग्राम पे ज्यादा स्कोप है, तो फिर मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगी. देन लिंक्डइन या यूट्यूब या व्हाट्सएप या ईमेल, दैट इज ऑन टू यू, ठीक है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिटिक्स, ओके, एंड डेटा ड्रिवन. उसके बाद इज योर सेकंड फेज, व्हिच इज ग्रोइंग ऑर्गेनिकली, राइट. सो पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली, कंसिस्टेंसी इज द की. हमको चैट सेक्शन पे देखने को सुनने को मिला था, and this instance makes no difference, right. Posting 4 times or 4 times per week on Instagram, right. Starting a YouTube channel and putting up those videos, building an email list, 3 days 7 workout plan, WhatsApp broadcast, which Anvesha talked about, ठीक है. Engage. First you are established, now you have started engaging. Okay, now the third phase, which is the paid scale. Okay, अब यहाँ पे बजट का थोड़ा सा लगेगा, ठीक है. आपके 50,000 पहले के एक महीने में यूज हो गए, 4 महीने में आपका इतना अच्छा खासा बन गया. उसके बाद नाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस थर्ड फेज, व्हिच इज पेड स्केल. अब इसमें क्या है, यू आर गेटिंग इनटू मेटा एड्स, यू आर गेटिंग इनटू गूगल एड्स, राइट, व्हिच wherein you are targeting the SEO options, paid marketing options, programmatics, all the metrics, right. What did you talk about? PPC, right. So you are exploring all those horizons, right. And then you market via that very manner. So basically आपको simple steps में बताए. So पहले become something, then engage with whom you want to engage, which is your target audience, and then engage extensively. Okay, in this manner you can go from the ground right up there.
Next slide. So career path in digital marketing. Okay, your roadmap to the industry. So को सबसे बेस्ट चीज इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. सो इसीलिए यू कैन एक्सप्लोर दिस हॉराइजन. ओके, एंड वी हैव केप्ट इट ओवर हियर. उसमें देयर आर मेनी हॉराइजंस, जिसमें से हमने 4 यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट इज कंटेंट एंड सोशल मीडिया, जिसके बारे में अन्वेषा टॉक्ड अबाउट. ओके, देन इज एसईओ एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसके बारे में मैंने बात की थी. देन इज योर ईमेल सीआरएम एंड ऑटोमेशन, अगेन मैंने बात की थी. डेटा एनालिटिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, जिसके बारे में भी मैंने ये बात की थी. सो बेसिकली ये स्लाइड मेरा था, तो मैंने अपना ही डाल दिया है कंटेंट, ठीक है. बट हर तरीके की मार्केटिंग की आपको यहाँ पे रोल्स, डेजिग्नेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी, राइट. ऑल 10 ऑफ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. एंड मार्केटिंग करियर जो है वो बेसिकली 4 या फिर तो आई वुड रादर से 3 फंडामेंटल हॉराइजंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज योर एंट्री लेवल, जहां पे यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 3 to 6 LPA. Engineers are also getting something likewise, so I guess that should not be a problem perhaps. Okay, it might be sad, it might be unfortunate, but it is what it is, and it is the reality, so accept it, okay, the way it is, right. Entry level pay, you can get into all these 4 horizons, wherein you'll be serving for about 2.5 years. Then you are promoted to the mid level, right. And eventually after an experience of 5-7 years, you get into the senior level. And in any marketing operations domain, the highest rank that you can climb up to in corporate, in private sector, is a CMO, chief marketing officer. Okay, so CMO जाने से पहले you become first an officer, then a junior executive, then you become an executive, senior executive. After that, you handle zonal managers and all of that, and eventually you go on becoming CMOs. Okay, in government sectors, if I talk about PSUs like IOCL, BPCL, GAIL, BHAL, BAIL, NTPCL. Okay, herein there is marketing division, जहाँ पे you have director marketing, executive director marketing, CGM, GM, DGM, coming down to chief manager, senior manager, manager, assistant manager, likewise. Okay, so the designations go similarly, and the years of promotion are subject to a lot many factors, which depends whether you are talking about the government sector or the private sector, right. So this was all about your career paths which you can explore, and let me tell you, you have fair opportunities in both private and government sectors. In fact, there are a lot of opportunities in Google as well for marketing. Not many people get to know about this, but if you have done bachelor's from any discipline, okay, if you have 1 or 2 years of experience in sales or marketing, okay, so you have a great chance of getting into Google in the discipline, in the domain, in the ground of marketing, right. And of course, who doesn't want to get into Google, right. It's a brand, it's a whole entity in itself, right. So Google, Oracle, okay, I should not be better talking about Oracle at this point of time for the news that we have come up from Delhi. Okay, but Google, Apple, and lot many big giants hire marketers, digital marketers being more particular, who have 1 or 2 years of experience, knowledge, good communication skills. That is a key aspect of marketing, even in digital mode, right. And a lot many other entities that are batting around that, be it articulation, allocation, and things likewise. Okay, digital marketers toolkit. Okay, so इसमें हम we won't go into depth, but these are the 4 horizons. इसके लिए you have many marketing toolkits which you can refer to. We talked about GA4. Okay, we refer to HubSpot, which is free and you can check it out. Okay, and Google Ads, of course, which you get to see more often. Meta Ads Manager, which Anvesha talked about, when to use, right. So this is basically a sum of what we said. Okay, कौन सा किस चीज़ के लिए ज़्यादा recommended है, एंड उसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, एंड उसमें क्या चैलेंजेस होंगे. यू कैन रेफर टू दिस, नॉट मच दैट आई नीड टू टॉक अबाउट. Next slide we have aboard is do's and don'ts of digital marketing, right. So इसमें do's के बारे में बात करते हैं, ठीक है. Be very particular about your target audience, have a content calendar, and be consistent, which Anvesha said earlier, right. Set up the analytics from day one, keep working upon it, identify your KPIs, KRIs, okay, key performance indexes that are very important in any aspect of digital marketing in terms of strategizing and implementing things about, right.
And the things that you need to avoid is something that we all know. Key takeaways, what you learned today. So